we just learned to make a list of stars and planets which meet the requirement of given magnitude and which also lie within the given range of observer's meridian. Now, all these stars that we identified may be visible to the observer, may not be visible, may be suitable for taking sites, may not be suitable. So now next we'll try and assess their visibility criteria and also their suitability for taking sites. On 15th June 1992, in position 20 degrees north, 75 degrees east, which all stars and planets of first and second magnitude within 15 degrees of observer's meridian at the end of civil twilight will be visible to the observer and suitable for taking sight. I'm sure you'll agree with me that first step shall be to make a comprehensive list of all stars and planets which meet the given requirement of magnitude and our angle. Now, to assess visibility, we know that the body must be above the observer's rational horizon. We also know for a body to be above the rational horizon, for whatever period of the day it may be, a latitude of the observer and declination of the body, if they are same names, yes, body would definitely be coming above the horizon for some part of the day. Or if they have opposite names, then the body shall be above the rational horizon only if the sum of latitude and declination is less than 90 degrees. Now, both these things can be summed up in one condition, wherein we say we find out L difference D, difference between latitude and declination, and if the difference is less than 90 degrees, the body shall be visible. What do we mean by L difference D here? Please note, it means we are talking of algebraic difference between latitude and declination. And algebraic difference means that if they are same names, you subtract. And if they are opposite names, you add. And if the algebraic difference is less than 90 degrees, the body shall be above the rational horizon and hence visible. Now, beta, what is this L difference D? This criteria basically tells us whether a certain celestial body will be above our horizon or below our horizon. If L difference D is less than or even equal to 90, we can see that body, it will be above our horizon. But if L difference D is more than 90 degrees, then that body will be below our horizon. So this is the criteria which we use. We have listed these 5 stars. Now, basis their declination and the latitude of the observer, we will be finding out whether they will be above our horizon or below our horizon. How do we calculate this L difference D? If L and D are of the same name, they are subtracted. The bigger one, the smaller one is subtracted from the bigger one. And if they are of opposite names, latitude and declination are of the opposite names, then they are added up to get the value of L difference D. So is it clear up to here, beta? सर इसको जरा उससे जरा दिखा देंगे एक बार डायग्राम से रेशनल होराइजन के, इसका मतलब क्या निकल रहा है एल माइनस डी एल प्लस डी। हमारे पास बेटा एक रैशनल होराइजन डायग्राम आ गई। गिव मी एनी लैटिट्यूड ऑफ योर चॉइस। वही 20 डिग्री नॉर्थ जो क्वेश्चन में दिया है। वेरी गुड। सो 20 नॉर्थ लैटिट्यूड लेते हैं। अगर लैटिट्यूड 20 नॉर्थ है तो इक्विनॉक्शियल ऐसे बनेगी and this will be 20. The pole would be here and this would also be 20. Now beta, you pick up any celestial body, any declination, कोई भी एक declination की body जो है pick up करो।
एनी डेक्लिनेशन ऑफ योर चॉइस, जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये दिखेगी या नहीं। सर एक ये दिया ना सर, अपना आंसर में आया मिमोसा आया है 59 डिग्री साउथ है। ओके, तो हमने यहाँ पे डेक्लिनेशन लिख दी 59 साउथ। करेक्ट बेटा, राइट? यस सर। सो वी वांट टू चेक नाउ कि ये स्टार हमें दिखेगा या नहीं। एल डिफरेंस डी के मेथड से अगर चेक करें तो लेट एंड डेक ऑपोजिट नेम तो ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स एल डिफरेंस डी आता है 79 इन दिस केस। करेक्ट? यस सर। तो 79 लेस देन 90 है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दिखना चाहिए। राइट बेटा? ओके, अब इस डायग्राम में आ जाओ। अगर ये 20 डिग्री है Z to Q, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी Q to S? 59 डिग्री। Q to S Q2 बेटा। सर 70 डिग्री। 70 डिग्री। वेरी गुड, इट विल बी 70 डिग्रीज। और जो ये स्टार है मिमोसा, इसकी डेक्लिनेशन है 59 साउथ। तो इसका मतलब है इक्विनोक्शियल से 59 डिग्री साउथ जाने पे ये स्टार मुझे मिलेगा। दैट मीन्स द स्टार इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। Correct beta, star is 59 south, the star is going to be somewhere here. You can see this star is above our horizon. So rational horizon diagram से हमने चेक कर लिया कि ये स्टार हमें दिखाई देगा, and this is what we got from the L difference D method also. ओके सर, तो मतलब अपने ये रैशनल होराइजन के जो भी ऊपर रहेगा, चाहे ऊपर हो मतलब नॉर्थ में या साउथ में, वो सब दिखाई देंगे, तो वो सारे सुटेबल है। Yes, that's right बेटा। मतलब सर मैक्सिमम अगर उसके साउथ में जाएंगे डिक्लिनेशन तो 70 इज द मैक्सिमम डिक्लिनेशन, उसके नीचे ही दिखेगा ना सर? वेरी गुड बेटा, अप टू 70 डिग्री साउथ ये स्टार हमें दिखाई देगा। 70 साउथ से जैसे ही डेक्लिनेशन ज़्यादा हुई ये दिखेगा नहीं, बिकॉज इट विल गो बिलो अवर होराइजन। सर सेम फंडा अप्लाई ऑन द नॉर्थ आल्सो सर? नहीं बेटा, नॉर्थ में सेम फंडा नहीं है। नॉर्थ में कोई भी डेक्लिनेशन का स्टार हो, सारे के सारे दिखेंगे, बिकॉज यू सी क्यू पॉइंट टू द पोल 0 to 90 पूरी की पूरी नदरली डेक्लिनेशन इसके बीच में ही कवर हो जाती है। यस। अच्छा, ओके, एंड द सेम थिंग इज टोल्ड टू अस बाय एल डिफरेंस डी मेथड आल्सो। ओके बेटा, क्लियर है? यस सर। Okay, let's go back to the video then. To check now L difference D for every star. Let's do that. So now we can close out this question. First, we have the comprehensive list of all stars and planets meeting the magnitude and R angle requirement, which I'm sure all of us would agree is the same as the result of question number 1. So we pick up the result of stars from earlier working and now assess whether they are going to be visible or not. These are the 5 stars which meet the requirement of magnitude and the R angle as far as this question is concerned. Now to assess visibility, we have just learned we have to get L difference D. So we insert one more column here for observer's latitude, and observer's latitude is 20 degrees north. Now we have to find L difference D. Before we show it up, just to reiterate, L difference D means algebraic difference. Same names, subtract, opposite names, add. And now we have L difference D showing up here. Opposite names, add, same names, subtract, and we have L difference D for all the 5 stars in this column. Now, for the star to be visible, this L difference D shall be less than 90 degrees. And we see that for all the 5 stars, for all the 5 cases here, L difference D is less than 90. Therefore, all these 5 stars shall be visible to the observer. Now, yes, they are visible to the observer. Are they suitable for taking sight or not? For
a star to be suitable for sight, obviously it has to be above the horizon and visible, otherwise sight cannot be taken. And two, there should be some minimum altitude, and we have put a cap of 10 degrees. So it must have altitude of more than 10 degrees. Okay, now beta, there is a requirement for the purpose of sight taking, that whenever we pick up a celestial body to be used for sight, we always say that the altitude of the body should be more than 10 degrees. So why do we say that? Because number one, when the body is close to the horizon, the sight would be difficult because the visibility close to the horizon is affected. And secondly, close to the horizon, when the altitude is less than 10 degrees, the value of refraction correction is very, very huge. So the refraction changes very fast. Therefore, there is a chance of having an error in the altitude of the body. So that is why less than 10 degree altitude, the body is not recommended for the purpose of sight taking. So we now have to check, visible तो सारे के सारे हैं because L difference D less than 90 आ रहा है. अब हमें ये चेक करना है कि किसी भी बॉडी का एल्टीट्यूड 10 डिग्री से कम तो नहीं है. नाउ हाउ कैन वी चेक दैट? उसके लिए हमें क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा L difference D less than 80. So only those stars will be suitable for taking sight whose L difference D is less than 80. So now we check out of these stars L difference D, first 4 stars L difference D is less than 80, but Acrux, the last star in the list, L difference D is greater than 80. So this particular star will not be recommended for the purpose of sight taking. Now if the altitude has to be more than 10 degrees, this L difference D has to be less than 80. So to assess the suitability for sight, we can make one more column and see in which all cases L difference D is less than 80. And we see that for first 4 stars, they are all suitable for taking sight. The last, that is Acrux, though it is visible, but it's too low and is not suitable for sight. So I hope you will remember this requirement to assess the suitability for taking sight, and also the conditions required for a star or celestial body to be visible to an observer. Okay, so now let me know beta where at whichever point you have doubts in the mind. सर एक बार ये एक्रेस वाला समझा देना सर उसको. रैशनल हॉराइजन पे बेटा नहीं सर ऐसी सर ये L माइनस डी लेस देन 80 डिग्री 83 है तो पर वो लो एल्टीट्यूड विजिबल साइट के लिए क्यों पॉसिबल नहीं है सर. ओके बेटा you want to ask कि why less than 10 degree is not suitable for sight? Is that the doubt बेटा? नो सर बाकी सर सब मतलब स्पाइकस या एक्रेस सब लोग सुटेबल फॉर साइट है, बट ये एक्रेस के केस में क्यों है सर, ये साइट के लिए क्यों नहीं है? ओके बेटा इसका तो सीधा आंसर है क्योंकि इसका एल्टीट्यूड बहुत लो है. इसका जो एल्टीट्यूड है इट इज लेस देन 10 डिग्रीज, राइट. अब ये हमें कैसे पता चला कि इसका एल्टीट्यूड लो है? वो हमें पता चला इसके एल डिफरेंस डी वैल्यू से. एल डिफरेंस डी if it is greater than 80, L difference D greater than 80 means the altitude of the body will be less than 10 degrees. Okay, let me show this to you in the rational horizon diagram. Is this L difference D MZD? L difference D जो है yeah it will give you the MZD ना. Therefore true altitude will be 90 minus L difference D, तो 7 degree आ जाएगा वो. That's right, that's right. L difference D is basically what we call as MZD. Okay, I'll show you in the rational horizon diagram.
So let us try to see this acrux on the rational horizon diagram. Let me put it here. Now the declination of acrux is 63 degrees south. Okay, let me pick up the degrees figure. 63 degrees south is the declination of acrux. So let's erase the first star. So our observer is at 20 degree north. So that's why the pole, the Q point, this 20 degree, 70 degree remains exactly like this. Now we are trying to show acrux in our diagram. So if acrux is 63 degree south declination, that means from point Q, we have to go 63 degrees south. If you go 63 degrees south, the star would be somewhere here. Now can you see beta what will be the altitude of this star? Seven degrees. 7 degree. Right. So this is going to be the altitude S to X, if you call this star as X, and this will be 7 degrees. So the altitude of the star is going to be less than 10 degrees, and less than 10 is not recommended for the purpose of sight taking. So is it clear now? सर अगर 10 आता है तो Okay, you can take it, you can give it the benefit of doubt. 10 degree को include कर लो आंसर में, don't reject it. Anything less than 10 can be rejected. ओके सर इसलिए 10 डिग्री का कोई only the refraction is the reason why it is not that much. Only Sir, 9 reflection. Only रिफ्रैक्शन एंड विजिबिलिटी फ्रॉम द हॉरिजॉन नो right. बट सर 10 ही क्यों 9 पे भी ऐसा मतलब क्या ज्यादा एरर आता है? नहीं बेटा 9 भी ले सकते हैं, कोई चाहे तो 11 भी ले सकता है. It is a individual choice, but आंसर में सर क्या स्टैंडर्डाइजेशन 10 डिग्री है? 10 is taken because it's a easy value to remember. Okay, now I'll give you one example. You have the almanac with you? Yes sir. Just open up the first page of the almanac. Yes sir. देखो बेटा सन का जो टोटल करेक्शन टेबल है, पहला टेबल है जो एल्मनैक का, वो किस वैल्यू से शुरू होता है? 934 करेक्ट. सो इफ यू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट डिग्री इट कम्स टू ठीक है सर 10 डिग्री 9.5. करेक्ट. नाउ यू टेल मी, अगर सन का एल्टीट्यूड इससे कम हो तो आपको टोटल करेक्शन कहां से मिलेगी? Yes sir, right. Luri's table. Okay, understood why how this 10 has been found out. Okay sir. Okay, अब इतना तुमने सीख लिया है तो एक चीज और सीखो. One thing more now. Now look at the Yes, second page of the almanac. What does the second page give you? 0 से 10 डिग्री का altitude correction. Very good. And now when you compare both these tables, you will see जो 0 to 10 वाला table है, that is much more complicated as compared to the table above 10. Can you see that? Yes sir. Right? This is the reason why we avoid taking a altitude for sight solving below 10. Okay. So और बताओ बेटा, और डाउट बताओ. but sir like in any question मतलब कि if anybody asks also that we can still take, no sir, correction have provided here, no sir? Yes, correction is provided, but you see up to 10 the correction is changing very fast.
That's why 0 to 10 covers up the full page. Yes. Whereas on the other side, 10 to 90 covers up only a small part of the page. Yes. Got it? Got it, beta? जी sir. So this is the scope of error when the altitude is below 10. Okay, so any other doubt, beta, up to here? सर अगर ओरल में पूछता है तो हम यही बता सकते हैं कि 10 डिग्री तक रिफ्रैक्शन चेंजेस वेरी फास्ट. That's right, ऐसा beta. बोल देंगे. That's right. ठीक है सर. सर एक बार ब्रीफ में बता देंगे, वो नेट चला गया था, लॉग आउट हो गया था. ओके बेटा, ये वीडियो YouTube पे डाल रखा है इसीलिए. सो ये जो आपने डायग्राम बनाया सर, इसका पूछा था, ये मिस हो गया था. ओके बेटा, नाउ कैन यू पिन पॉइंट एंड टेल मी व्हाट ऑल यू मिस्ड? बस ये आपने जहाँ ये 7 डिग्री ट्रू ऑल्टीट्यूड बताया था, उसके बाद नेट चला गया था सर. ओके, देन यू हैव नॉट मिस्ड मच बेटा. ये 7 डिग्रीज हमें पता चल गया कि जो स्टार है इट्स एल्टीट्यूड इज 7 डिग्रीज, इट इज 7 डिग्रीज अबव द होराइजन. सो अगर किसी का एल्टीट्यूड 10 डिग्री से कम है तो हम उसे साइड सॉल्विंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं. ओके, सो वी जस्ट डिस्कस्ड कि जो हमारा टोटल करेक्शन टेबल है ऑन द फर्स्ट पेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 डिग्रीज ओनली. सो दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग दिस लास्ट स्टार एक्रक्स. ओके सर. ओके, और बेटा और कोई डाउट? Okay, so shall we move ahead now to the third type? Yes sir. Okay. जो थर्ड टाइप है बेटा, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल. सो इसको धीरे धीरे मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट अहेड है, जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे आता है. सो थर्ड वन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप. So please keep your attention to the screen. Conditions required for a star or celestial body to be visible to an observer. Another type of question that is asked in the exam is to figure out or find the stars and planets which are suitable for exmeridian observations. On 15th June 1992, in position 20 degrees north, 75 degrees east, which all stars and planets of first and second magnitude within 15 degrees of observer's meridian at the end of civil twilight will be suitable for ex-meridian observation. I'm sure you can see that the first part of the question is same as has been solved earlier. It's only that now we have to figure out as to which of those stars shall be suitable for ex-meridian observation. We know every visible star or planet need not be suitable for ex-meridian observation. If a star is suitable for ex-meridian observation, we need to obtain R angle P, which is the difference in the SHA of the star or the SHA of the planet in question and the SHA of an imaginary star on the observer's meridian. Okay, now before we go ahead beta, we have done the ex-meridian method. So that time I told you how to check the suitability of a body, whether it can be used for ex-meridian or not. So you remember that beta? We discussed about ex-meridian tables. So Yes sir. लिमिट्स होती है सर. Right. तो उसमें लिमिट, आपने लिमिट से मिनट में दी थी. Right. Table 4. Very good बेटा. So basically हमने वहाँ पे देखा था कि एक्स मेरिडियन टेबल से हम किसी भी बॉडी की एक्स मेरिडियन लिमिट को निकाल सकते हैं. So how do we find that limit? We enter into table 1 with latitude and declination. It gives us factor A. With the factor A we enter into table 4 और table 4 से हमें लिमिट मिल जाती है. तो अब हमें ये जो 5 स्टार हमारे पास आए हैं, जिनमें से 4 सूटेबल फॉर साइट हैं, चेक करना है कि आर दे सूटेबल फॉर एक्स मेरिडियन ऑल्सो. तो एक तो हमें इन स्टार्स की एक्स मेरिडियन लिमिट निकालनी होगी.
that is one thing which we will do. We will find out the x meridian limit for all the stars. कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसी टेबल में से फाइंड आउट करेंगे, टेबल ए एंड टेबल 4, टेबल 1 एंड टेबल 4 में से। अब दूसरी चीज़ हमें ये चेक करना है, लिमिट तो आ गई हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि कोई स्टार उस लिमिट के अंदर है या उसके बाहर चला गया है। अब ये कैसे चेक हो सकता है? हाउ टू फाइंड आउट, लेट अस से किसी की लिमिट आ जाती है 20 मिनट्स, तो अब ये कैसे चेक करें कि कोई स्टार हमारे मेरिडियन के विद इन 20 मिनट्स है या उससे दूर चला गया है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक स्टार का एंगल P फाइंड आउट करते हैं। एंगल P इज़ बेसिकली द आर एंगल, लोकल आर एंगल और ईस्टर्ली आर एंगल, वन ऑफ दीज टू। सो एंगल P हम फाइंड आउट करते हैं हर एक स्टार का। एंगल P कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? वी नो द SHA ऑफ द स्टार ऑन आवर मेरिडियन, ये पहली चीज़ है जो हमने निकाली थी। वी नो द SHA ऑफ ऑल दीज स्टार्स ऑल्सो। सो अगर हम इन दोनों SHA का डिफरेंस निकाल लें तो हमें स्टार का एंगल P मिल जाएगा, या हमें पता चल जाएगा कि वो स्टार हमारे मेरिडियन से कितने डिग्री पे है। नाउ वंस यू नो एंगल P, आफ्टर दैट इट इज़ ईजी टू फाइंड कि वो कितने मिनट में हमारे मेरिडियन पे आएगा, बिकॉज एंगल P विच इज़ द आर एंगल, इसे कवर करने की जो स्पीड है स्टार्स की वो हमें पता है। स्टार्स अपने आर एंगल को कवर करते हैं एट ए स्पीड ऑफ 15 डिग्रीज 2.5 मिनट्स। सो स्पीड इज नोन टू अस 15 डिग्री 2.5। आर एंगल कितना है स्टार का वो भी हम पता कर लेंगे, एंड अब हमें इस स्पीड से डिवाइड करके ये पता करना है कि हाउ मैनी मिनट्स अवे दैट स्टार इज फ्रॉम आवर मेरिडियन। सो अभी इसको प्रैक्टिकली करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। 15.25 जो बताया आपने, हाँ बेटा, if all the stars are same, all the stars move at a speed of 15 degrees 2.5 minutes per hour. per hour, that's right. Okay sir. ओके अब आप ये पूछ सकते हो कि ये सर कहाँ से पता चला आपको? पूछने वाला था सर के। बिल्कुल, अब ऐसे करो बेटा, एल्मनैक हाथ में है ना, यस सर। ओपन अप द इंक्रीमेंट टेबल। यस सर। इंक्रीमेंट टेबल में बेटा 59 मिनट एंड 60 सेकंड पे चले जाओ। यस सर। बताओ मुझे कि एरीज का इंक्रीमेंट कितना है? 1502.5। पता चल गया बेटा, कहाँ से आया 15.2.5? थैंक यू सर। एक घंटे में स्टार्स इतना ही आर एंगल कवर करते हैं। नाउ टेल मी हाउ मच डज द सन कवर? 15 डिग्री। 15. वेरी गुड। एंड टेल मी हाउ मच डज द मून कवर? 1490. वेरी गुड। अब तुमसे कोई भी ओरल में पूछ ले कि सन किस स्पीड से चलता है, स्टार किस स्पीड से चलते हैं, मून किस स्पीड से चलता है, तो तुम बता सकते हो। थैंक यू सर। ओके, अब ये एक नई इसके चीज पता चली थी। हाँ, अब इसके साथ एक और नई चीज़ और सीखो कि जो मून की स्पीड है वो एक्चुअली 1419 नहीं है, 1419 में वी करेक्शन ऐड भी होता है, सो उसका ध्यान रखना है। सर ये प्लीज एक बार बताना सर दोबारा, 51 वाला, 51 मिनट्स। नहीं बेटा, 51 मिनट्स तो बोला ही नहीं हमने कहीं। क्या बोला था सर वो इंक्रीमेंट टेबल में? 15 मिनट, 59 15 मिनट पे, I 59 told मिनट you 60 to सेकेंड। go to the increment of 59 minute and 60 second, which is 1 hour. सर ये वी करेक्शन सर प्लैनेट पे भी होता है एप्लीकेबल, तो प्लैनेट का क्योंकि ये इसलिए होता है बेटा, क्योंकि मून और प्लेनेट की जो स्पीड है ना वो चेंज होती रहती है, उनकी स्पीड फिक्स नहीं है। सन और स्टार की और एरीज की तो फिक्स है। सो ये जो चेंज होता है यही चेंज वी करेक्शन है। तो अगर कभी सेंट्रियल डे में आपको कोई करेक्शन करते हैं क्या सर? जस्ट होल्ड ऑन बेटा, अगर आपको कोई भी
प्लैनेट की या मून की स्पीड पूछता है, तो ये जो 1 घंटे का इंक्रीमेंट है इसमें वी करेक्शन को भी कंबाइन करना है साथ में। ओके ओके, हाँ आप पूछो बेटा, आप तुम्हारा क्या डाउट था? सर भाई जो बोल रहे थे ना 51 मिनट जो मून रहता है मिनट्स में, उसी के बीच में उसका डिफरेंस रहेगा सर हमेशा? नो आई डिडंट गेट यू जो बेटा। जो सर मून का जो स्पीड वेरिएबल है, सो जो 51 मिनट्स में जो डिफरेंस आता है सर उस दिन बता रहे थे ना, उसी के It is बीच में because हमेशा of रहेगा this वो? speed only. Yes, it is because of this only. जो 51 मिनट्स की डिले होती है मून के फिनोमिना में, इट इज बिकॉज मून की स्पीड थोड़ी कम है। देखो सन की स्पीड 15 डिग्रीज पर आ रहा है, मून की 14 19 प्लस वी करेक्शन है। दिस इज द रीजन व्हाई मून गेट्स डिलेड। और सर वी करेक्शन विल बी ऑलवेज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द डे वाइज से चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी वेरी करता रहेगा हमेशा वो। यस दैट्स राइट। ओके, Already learned how to calculate the SHA of an imaginary star on observer's meridian by equating the LHA to 360. So P is the difference between the SHA of this imaginary star on observer's meridian and the SHA of the star or SHA of the planet in question. Then we obtain the time to Marpas, the body is yet to cross the meridian, or the time from Marpas or since Marpas if the body has already crossed the meridian. And how do we get this time? We get this time by dividing this R angle P by 15 degrees 02.5 minutes. This will come in hours. We multiply by 60 to get this time in minutes. What is this 15 degrees 02.5 minutes? It's the rate of change of R angle for stars and planets. What is this rate for sun? We know rate of change of R angle for sun is 15 degrees per hour, and it's 15 degrees 02.5 minutes for stars and planets. Then we use any of the nautical tables, and from there we find exmeridian limits applicable to this case, which will depend on the observer's latitude and the declination of the body. So we get the exmeridian limits from nautical tables. If the time to Marpas or time from Marpas calculated above is within the exmeridian limits obtained from the nautical tables, then the star is suitable for exmeridian observation. Otherwise, it is not suitable for exmeridian observations. One of the exmeridian limit table is as shown here on the screen, wherein you can use them with declination of the body and the observer's latitude, different tables for same and contrary names. However, you are likely to have different methods of obtaining exmeridian limits based on the nautical tables that you use. So please familiarize with the process of obtaining exmeridian limits from the nautical tables that you use. Each nautical table may have slight difference in the process and also in the values, because these values are approximate values. So there will be also a slight variance in the values, which is insignificant. You can go by the values that you get from your tables. Now we are in a position to close out this question. On 15th June 1992, in position 20 degrees north, 75 degrees east, which all stars and planets of first and second magnitude within 15 degrees of observer's meridian at the end of civil twilight will be suitable for ex-meridian observation. I'm sure we'll agree that first part of making a comprehensive list of stars meeting the magnitude and R angle requirement, we have already done. It's the same question as the earlier ones. So we'll bring forward the same list that we made in the earlier questions. We know these are the 5 stars which meet the requirements of magnitude and the R angle. Of these, Acrux is not suitable because of its low altitude. Now we'll assess their suitability for ex-meridian observation. Of course, we'll not be doing so for Acrux because since it's not suitable for sight, so gauging its suitability for ex-meridian would not be of any value. So to get the
to assess the suitability for X-meridian observation, we need to get angle P. So for which we need to recall the value of SHA of the imaginary star on observer's meridian, which was obtained in the first question, and that value was 169 degrees 38.6 minutes. So SHA of the imaginary star on meridian would be so much. SHA of the respective star is as tabulated here. The difference between these two for respective stars shall give us the R angle P. So this R angle P for Spica is the difference between 169 degrees 38.6 minutes and 158 degrees 47.7 minutes. Likewise, we have got the R angle for all the stars. Next we get is the time to Marpas or time from Marpas by dividing this R angle by 15 degrees 02.5 minutes. When we divide, we get time to or from Marpas as shown here. This is 43 minutes 16 seconds, and we have time for other stars also. Now we use nautical tables and get the X meridian limits using the nautical tables. We have used the Norris tables to get the X meridian limits. So these X meridian limits are as per the Norris table: 29 minutes for Spica, 44 minutes for Elliott, and the others as listed. We compare these X meridians limits obtained from nautical tables with the time to or from Marpas that is calculated. And what do we find? Except for Spica, which is outside the X meridian limits, the other three stars, Elliott, Mimosa, and Gekrux, they all are within the X meridian limits, and therefore these three stars are suitable for X meridian observation. Now, in some questions, if the R angle, like in this case, it was given to find the stars which are within 15 degrees of observer's meridian. Now, if this angle, R angle limit is not given in the question, then, and we have to perform this check for X meridian observation, then we can check the stars falling within 20 degrees of R angle from observer's meridian. So if this limit is not contained in the question, you can set this limit at 20 degrees and carry out a check that shall suffice our purpose. Okay, so have a good look at the table beta and let me know which all points you have doubts. So looks like it is clear, beta. All steps are clear. Sorry, last line बताना सर दोबारा. If the R angle within which star to found वाला. बेटा अब अगर यही क्वेश्चन हमें वो देते 15 June 92 in position so and so, which all stars of planet and stars and planet of first and second magnitude will be suitable for X meridian observation. सीधा यही लिखा होता, on this date this position find the stars and planets suitable for X meridian observation, and they don't mention this 15 degrees anywhere. अब अगर ये 15 डिग्री मेंशन ना किया हो तो यू रिमेंबर हमने वो 15 डिग्री की रेंज से ही तो स्टार्स के नाम निकाले थे लिस्ट में से, राइट बेटा? तो अगर ये 15 डिग्री हमें ना दिया हो और उन्होंने एक्स मेरिडियन सूटेबिलिटी के लिए हमसे स्टार्स पूछे हों, then we can use a value of 20 degrees. क्योंकि ये 20 डिग्री एक ऐसी फिगर है, 20 डिग्री बाहर, 20 डिग्री के बाहर अगर कोई स्टार है, a star which is more than 20 degrees away from our meridian can never be suitable for a X meridian site. X meridian तभी पॉसिबल है अगर कोई स्टार 20 डिग्री के अंदर हो. अगर वो इससे बाहर चला जाए तो वो X meridian के लिए सूटेबल हो ही नहीं सकता है.
So you should know this value, 20 degrees value. So अगर किसी क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो तो आप ये 20 डिग्री की वैल्यू को पिकअप यूज कर सकते हो। सर लाइक इस क्वेश्चन में 15 डिग्री था, उसकी जगह आप कह रहे हैं ना 20 डिग्री। राइट, अगर ये 15 यहाँ नहीं होता तो हम क्या करते, तो हम 20 डिग्री वैल्यू लेके स्टार्स की लिस्ट बना लेते। मे बी 3-4 स्टार्स मोर विल गेट एडेड अप। सो हम उनके साथ एक लिस्ट बनाते और एक्स मेरिडियन की सूटेबिलिटी चेक कर लेते। ओके बेटा, सर गॉट आपने इट? क्वेश्चन बोला कि यस सर। बोल सर ये बोल, एक्स मेरिडियन वैल्यू कहाँ से आई? आस्क अगेन बेटा। एक्स मेरिडियन लिमिट्स जो लिखी हैं ये, उनकी वैल्यू कहाँ से आई है सर? ओके, ये आई है बेटा एक्स मेरिडियन टेबल 1 और टेबल 4 से, जो नॉरिस टेबल में हमने देखा था। ओके सर, ओके। मरपास मेथड में, एक्स मेरिडियन मेथड में हमने किया था ना बेटा, आई शोड यू टेबल 1 एंड टेबल 4। यस सर, यस, रिमेंबर। राइट, ये वहीं से निकाली है बेटा। सर आपने क्वेश्चन बोला था कि फर्स्ट एंड सेकंड मैग्नीट्यूड सुटेबल फॉर द एक्स मेरिडियन साइट। सर क्वेश्चन में एएम पीएम और द ट्वाइलाइट विल मेंशन ना सर, एक भी चीज तो मेंशन करनी चाहिए उससे। राइट बेटा, 90% ऑफ द क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन होगी, वेदर इट इज़ AM और PM। बट इफ somebody wants to make the question a little tricky, तो वो क्या कर सकता है, अब इस क्वेश्चन एंड ऑफ सिविल, एंड ऑफ हाँ सिविल ट्वाइलाइट राइट, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें मतलब बोला है एंड ऑफ सिविल ट्वाइलाइट। अब आप मुझे ये सर एक चीज तो रहेगी ना सर, एएम पीएम रहेगा, अदरवाइज ट्वाइलाइट मेंशन रहेगी, एंड ऑफ ट्वाइलाइट और फिर मॉर्निंग में जो भी ट्वाइलाइट रहती है। यस बेटा, either he will tell you AM PM straight away, or he will tell you whether it was the end of twilight or beginning of a twilight. ओके सर। ओके, अब ये जो एंड ऑफ सिविल ट्वाइलाइट होती है, मॉर्निंग टाइम में कब होता है बेटा ये एंड ऑफ सिविल ट्वाइलाइट? सनराइज पे होगा। सनराइज पे होता है। सर सारे सनराइज पे ही होते हैं खत्म। वेरी गुड। सो सनराइज पे तो हम साइट ले ही नहीं सकते कोई, बिकॉज ऑल द स्टार्स आर गोइंग टू डिसअपियर। सो दिस टेल्स अस दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग, he is talking about the evening in this case. Okay, so beta I would recommend that you take a screenshot this video.